Okay, hello बच्चों. Okay guys, so in the last class we have done dimension chapters, जहाँ हमने आपको ये बताया था कि डायमेंशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में है आज, उसे हम डायमेंशंस भी क्यों बोलते हैं. आई मीन दोज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. क्यों और उसकी रीजन हमने आपको बताया था पिछले क्लास में. ठीक है, फिर स्कूल के हिसाब से जो स्कूल में जो डिफिनेशन सिखाई जाती है डायमेंशंस की, वो क्यों सिखाई जाती है इस तरीके से, डायमेंशंस के क्या एप्लीकेशन है, ये हमने पिछले क्लास में किया था. आज हम आपको एरर सिखाएंगे कि एरर क्या होता है और मेजरमेंट के साथ रिलेटेड कैसे है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं. Okay, so starting with error. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप एरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एरर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो. ओके, हाउ कैन यू डिफाइन एरर. तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके पास एक लंबा सा वायर है, कुछ इतना लंबा. ठीक है, यस. और मैं आपसे कहूं कि इसकी लेंथ मेजर करके बताओ मुझे कि ये कितना लंबा वायर है, हाउ मच इज इट्स लेंथ. तो आप में से कोई मुझे कह सकता है कि सर इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, कोई कह सकता है सर इसकी लेंथ 3.1 सेंटीमीटर है, कोई कह सकता है सर इसकी लेंथ 2.98 सेंटीमीटर है. तो यहाँ आप सबकी रीडिंग में, आप सबके ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू है इसकी वो अलग अलग है. इसका मतलब आप में से कोई भी करेक्ट है, ये गारंटी से ये बात नहीं कही जा सकती है. करेक्ट, आप में से कौन करेक्ट है ये गारंटी से ये बात नहीं कही जा सकती. ओके, तो फिर सर इसका एक्चुअल लेंथ कैसे पता चलेगा. जाहिर सी बात है, एक्चुअल लेंथ पता करने के लिए हमें लेकर आना पड़ेगा कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं. जस्ट सपोज, सो लेट्स टेक अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. जस्ट अ मिनट बच्चा, 1 मिनट दो मुझे. ये हमने ले लिया एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और आप लोगों को भी दिखा देता हूं मैं ये सामने आपके. ठीक है, फाइन. ओके, तो हमारे पास ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. ये देखिए, मीटर स्केल बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है लेंथ मेजर करने के लिए. हर कोई आप में से जानता है इसके बारे में. ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ओके इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखिए और इसके हिसाब से इसकी लेंथ को मेजर करने की कोशिश कीजिए, एक आइडिया लीजिए और बताइए कि इसके हिसाब से इसकी लेंथ कितनी है. तो मुझे जो दिख रही है इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, मीटर स्केल के हिसाब से, ये अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर के आसपास या उससे थोड़ा सा कम. करेक्ट. तो अब पॉइंट ये है कि सर ये जो डिवीजन जिसने डाला हुआ है, ये जो लाइंस डाली हुई है, क्या ये लाइंस परफेक्टली स्पेस्ड है, क्या ये रीडिंग एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर यहां होगा, ये कैसे गारंटी दे सकते हैं. आ रही है बात समझ में. तो इस चीज की गारंटी कौन देगा कि इस इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग है वो भी परफेक्ट है. तो आप बोलोगे सर वो कंपनी देगी. ओके, तो कंपनी में भी ये जो रीडिंग डाली जाती है वो भी तो किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, या उसे भी कोई डालता ही होगा. तो वहां भी उससे भी गलती हो सकती है. तो पता ये चला कि भाई हकीकत में ट्रू लेंथ, एक्चुअल लेंथ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है. क्योंकि आप क्या गारंटी दोगे. ये आईफोन वाले आपको आईफोन का साइज देते हैं, डायमेंशन बताते हैं कितना सेंटीमीटर है, बट आप उनसे भी पूछे क्या ये एक्चुअल साइज है, तो आपको बोलेंगे नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा एरर है. एरर का मतलब अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में. कहीं अनसर्टेनिटी ज्यादा हो सकती है, कहीं अनसर्टेनिटी कम हो सकती है. और इस एरर का मतलब, इस एरर की रीजन बहुत सारे हैं. एक रीजन तो ये है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है
उस इंस्ट्रूमेंट में ही खुद एरर हो, मतलब उसमें जो रीडिंग दी हुई है वो परफेक्ट नहीं है। और ऑब्वियसली हर इंस्ट्रूमेंट कुछ न कुछ एरर उसके साथ एसोसिएटेड होता है। हाँ, आप अगर अच्छे ब्रांड का खरीदेंगे मीटर स्केल, हो सकता है उसमें एरर कम हो, बट क्या परफेक्ट है वो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको कोई गारंटी दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो एरर जो है, इट इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। सो एरर की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी इन मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्योंकि कई सारे मेजरमेंट में ऑब्जर्वेशन इंक्लूड है, यहां भी ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड, ठीक है। अब मेरी बात समझे ध्यान से, समझ में आ गया। तो ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगी सर? तो एक्चुअली में अगर मैं आपसे बड़ा दबंग होकर ये बात बोलूं, सो आई कैन से देयर इज नथिंग लाइक ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, टू बी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग। बट देन सर, how come we say that the true length of this is this much or true length of this is this much? How come we say like that? ठीक है, तो क्या क्या वजह, फिर कैसे बताएंगे ट्रू लेंथ को? तो ट्रू लेंथ का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपको इस वायर का ट्रू लेंथ बताना है, तो ट्रू लेंथ जैसी टेक्निकली कोई चीज एग्जिस्ट तो नहीं करती, बट यू विल बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल लेंथ और ट्रू लेंथ व्हेन यू टेक सो मेनी रीडिंग, बहुत सारे रीडिंग्स लो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेजर किया इसका लेंथ 4.9 सेंटीमीटर, किसी ने आप में से मेजर किया 4.85 सेंटीमीटर, किसी ने बोला 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से जितना ज्यादा रीडिंग ले सकते हैं लीजिए, और फिर उन सब का मीन ले लीजिए, मतलब एवरेज ले लीजिए, सारे रीडिंग को ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दीजिए। ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू होगी, और टेक्निकली इसी को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो कोई कंपनी, आईफोन वाले भी जो आपको इसका डायमेंशन बताते हैं ना, तो वो भी इसी तरीके से मेजर होता है। एवरेज वैल्यू आपको बताते हैं, बहुत सारे रीडिंग्स लेते हैं और फिर इसका एवरेज वैल्यू बताते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि ट्रू वैल्यू जैसी कोई चीज सच एग्जिस्ट नहीं करती, बट यस, टेक्निकली हम इसे कह सकते हैं मीन और द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो ध्यान से रखें, तो आपने मान लिया इसके 10 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, you can say 10 observation means 10 reading. So A1 is the first reading, A2 is the second reading, A3 is the third, fourth reading, fifth reading, sixth reading, seventh reading, eighth reading, ninth reading, is ninth reading, 10th reading. You can take so many readings, as many readings as you want. जितना ज्यादा लेंगे बच्चे, listen to me, जितना ज्यादा रीडिंग लोगे ट्रू वैल्यू यानी कि एवरेज रीडिंग उतनी ही एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, बहुत ज्यादा रीडिंग लेती हैं। इनफैक्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में तो कई लोग 2 साल 3 साल तक रीडिंग लेने में लगाते हैं, अगर आपको किसी कंक्लूजन में पहुंचना है तो ऐसा होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसे आपने ये थ्योरी के बारे में बहुत सुना होगा कि द होल यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, है ना, whole universe is expanding, everything is going away from each other। तो ये कंक्लूजन हमने किया कैसे? हम एक टेलीस्कोप से एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे थे, और टेलीस्कोप जो था उसे अब हबल टेलीस्कोप कहते हैं, और जिस साइंटिस्ट ने भी इसे ऑब्जर्व किया उसका नाम था हबल। तो उसने काफी 2 या 2.5 साल लगाए, उसने रीडिंग्स लगातार लेते गए, बहुत सारे स्टार्स को उसने ऑब्जर्व किया, और उन सारे रीडिंग्स के बाद कंक्लूजन निकला। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां सालों साल रीडिंग लेना पड़ता है, ठीक है। या आप ये देख लेना, कोरोना वैक्सीन जो हमने डेवलप किया ये तो बहुत जल्दी हो गया, बट एक्चुअल में जो बाकी इससे पहले जितने भी वैक्सीन आए हैं, चाहे वो पोलियो के हो या अदर वैक्सीन हो, तो उन वैक्सीन की एफिशिएंसी चेक करने के लिए भी हम डेटा से रीडिंग लेते थे, और रीडिंग कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल की रीडिंग्स लेने के बाद तब जाके हमने नतीजा निकाला, ठीक है। तो रीडिंग तब आप लेंगे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिजल्ट्स, उसकी रीडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो A1, A2, A3, A4 कई रीडिंग लीजिए, जितने ज्यादा रीडिंग लेंगे एवरेज उनका
क्लोजेस्ट होगा ट्रू वैल्यू के, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू जैसी एक टेक्निकली एक चीज आपके पास आ गई, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, इन सब का, इन सारे रीडिंग्स का मीन है, इन सारे रीडिंग्स का क्या है, मीन है। मीन का मतलब A1 प्लस A2, सारे रीडिंग्स को आप जोड़ दें। अगर आपने nth रीडिंग्स ली हैं तो सारे रीडिंग को जोड़े और n से डिवाइड कर दे, ये आपका ट्रू वैल्यू है, ठीक। आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब ये ट्रू वैल्यू है। एक एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला था कि किसी ने इसका मेजर किया 4.98, किसी ने 5 सेंटीमीटर, किसी ने 5.1, किसी ने 5.2, सबको जोड़ दें और इनसे डिवाइड कर दें, वो आपकी ट्रू वैल्यू आएगी। इसको मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रीडिंग्स हो गई। अब अगर किसी, ध्यान से सुनना, अगर आईआईटी में और नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ट्रू वैल्यू मेंशन है क्वेश्चन में, तब तो आप वही ले लो। अगर ट्रू वैल्यू नहीं मेंशन है, then you have to take the mean or the average of all the readings, and this mean and this average is the true reading. I hope it is clear, ठीक है। अब आइए इसके बाद एरर तो आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए आप कभी भी किसी भी, मतलब मार्केट में आप जाए और एक रजिस्टर खरीद के लाए, तो उस रजिस्टर पे आपको लिखा दिखेगा, रजिस्टर पे मार्केट से अगर खरीदेंगे तो ऐसा कुछ लिखा दिखेगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.2 ओम, इस तरीके से। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 6 है ना, ये आपकी ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू का मतलब एवरेज है, मीन है। और 0.2 जो है प्लस माइनस के साथ, ये आपका एरर है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। प्लस माइनस इसलिए कि एक्चुअल वैल्यू 6 से इतना मैक्सिमम कितना ज्यादा हो सकती है, 0.2 मैक्सिमम ज्यादा हो सकती है, और या कितना मिनिमम कितना कम हो सकती है, 0.2 कम हो सकती है, ठीक है। तो यहां से ये बात समझ में आई है कि जो रीडिंग है आप फाइनली किसी चीज की, वो ऐसे लिखते हो, सर्टेन पार्ट, ट्रू वैल्यू मतलब सर्टेन पार्ट, और फिर प्लस माइनस के साथ एरर। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। मतलब एरर पॉजिटिव होने का मतलब है ट्रू वैल्यू से ज्यादा आना, नेगेटिव होने का मतलब है ट्रू वैल्यू से कम आना, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि हर रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर मिलेगा। जैसे अभी आपने देखा था, मान लीजिए इसकी एक्चुअल लेंथ जो है, मैं कह रहा हूं आपसे, जस्ट सपोज इसकी एक्चुअल लेंथ 5 centimeter. Just suppose it that I say its actual length is 5 centimeter. और आपने मेजर किया, आपको लेंथ मिल गई 5.2 सेंटीमीटर, तो आपका एरर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आपकी रीडिंग ट्रू वैल्यू से ज्यादा आई है। कितनी ज्यादा हुई? 0.2। सो 0.2 इज द एरर। तो हर इंडिविजुअल रीडिंग, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट के साथ एरर अटैच है। ऐसे एरर को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। लेट मी राइट इट, एब्सोल्यूट एरर्स, absolute errors. So error related to individual readings, और ये एरर मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, समझें। मैथमेटिकली एब्सोल्यूट एरर को, जैसे आपकी फर्स्ट रीडिंग A1 में कितना एरर है, तो उसको आप ऐसे लिखोगे, डेल A1, डेल ऑब्वियसली आप समझ गए, डेल इज यूज्ड फॉर चेंज। सो एरर इन द रीडिंग फर्स्ट इज रीडिंग ऑफ फर्स्ट रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू, दैट मीन्स A मीन। सिमिलरली एरर इन द सेकेंड रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर सेकेंड रीडिंग में कितनी है बच्चे, सो सेकेंड रीडिंग माइनस A मीन। एंड दिस वे इफ यू हैव, अगर आपके पास n रीडिंग्स थी, इफ यू हैड n रीडिंग्स, देन यू कैन गो अप टू an, del an, है ना, एरर्स इन दी nth रीडिंग, और तब आप लिखेंगे an रीडिंग, nth रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू। अब ये पॉजिटिव भी आ सकती है बच्चे, नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने जो रीडिंग ली है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आई है या कम आई है। ट्रू वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अब तो वही लेना है,
नहीं गिवन है क्वेश्चन में, देन यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स। आई होप इट मेक्स सेंस, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट एरर। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर और एवरेज एब्सोल्यूट एरर, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, सो लेट्स डिस्कस दैट। मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो एब्सोल्यूट एरर बाय delay ऐसे आप शो करते हो। व्हेन वी टॉक अबाउट मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर, आप यहां मीन ऐसे लिख दे, दिस इज द वन वे टू राइट दिस, और यू कैन राइट del a एब्सोल्यूट एरर मीन, दैट मींस बार ओवर इट, ठीक है। अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं? इसे डिफाइन करते हैं कि जितने भी आपको एब्सोल्यूट एरर्स मिले थे, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर्स जितने भी मिले थे, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स जो हर रीडिंग के साथ अटैच थे, उन सब का मैग्नीट्यूड को सम कर दो और टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स से डिवाइड कर दो, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाई वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर? सो आई विल जस्ट गिव यू रिप्लाई, डोंट वरी। सो द पॉइंट इज मैथमेटिकली लेट्स डिफाइन इट। सो मीन एब्सोल्यूट एरर is equal to magnitude of absolute error of the first reading plus magnitude of absolute error of the second reading plus magnitude of error of the third reading। पहले साउंड बंद कर दो तो उसका, divided by number of readings, so we have number of readings n। now here is the question, sir mean absolute error में magnitude क्यों ले रहे हैं absolute errors का? there is a reason, understand logically। suppose the true value, that means mean value is like we have taken example, how much length? 5 centimeters, suppose it, and we have taken 2 readings only just for the simplicity। पहली रीडिंग आई हमारी 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। तो इसके साथ अगर आप चेक करोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया फर्स्ट रीडिंग में? del a1 में मीन एब्सोल्यूट एरर इज प्लस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड सपोज कि जिस सेकेंड रीडिंग में हमारे पास आया, रीडिंग जो सेकेंड आई वो आई 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मुझे बताइए अब कि एब्सोल्यूट एरर इसमें कितना आया? एब्सोल्यूट एरर सेकेंड रीडिंग में 4.9 माइनस 5, तो वो तो आपका आ गया माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यहां से एक बात ये पता चली कि सर अगर हम एब्सोल्यूट एरर का मीन लें तो यहां देखिए, यहां प्लस 0.1 है, यहां माइनस 0.1 है, तो सिर्फ अगर आप ऐड कर दो डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर्स को तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा? 0। दैट मींस ऑन एन एवरेज देयर इज नो एरर इन द एक्सपेरिमेंट, व्हिच डज नॉट मेक एनी सेंस। हर एक्सपेरिमेंट में एरर होता है, इसलिए आपको मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक। वंस यू गेट द मीन एब्सोल्यूट एरर, अब आप लैब में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, आपसे बोला गया इसी वायर का लेंथ मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और आपकी ये वैल्यू यहाँ आई, इतनी आई यहाँ, तो आपने बहुत सारे रीडिंग्स लिए। रीडिंग्स लेने के बाद आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाला। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद मीन एब्सोल्यूट निकाल लिया। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एवरेज एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मींस एवरेज एरर ऑफ 100 रीडिंग्स और 200 रीडिंग्स, व्हाटएवर। अब आप फाइनली अपने टीचर के पास जा रहे हैं। अब आपके टीचर ने बोला लेट टेल मी द फाइनल लेंथ। सो फाइनल लेंथ यू विल राइट लाइक दिस। फाइनल रीडिंग जो आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे, फाइनल रीडिंग और रिजल्ट जो आप अपने टीचर को देंगे वो ये देंगे। आप बोलेंगे ट्रू वैल्यू इज दिस, ट्रू वैल्यू इज a mean, okay, true value is a mean with some error, and error is mean absolute error, okay, mean absolute error, individual error नहीं लिखेंगे, mean absolute errors, उन सारे error का mean। तो ये फाइनली आप अपने टीचर के पास ऐसे जाओगे। बिलीव मी, अगर आप जाके अपने टीचर को सिर्फ ये बोलते हैं ना कि सर हमने लेंथ मेजर किया
और हमारा लेंथ इतना आया है। अगर आप टीचर के पास गया और आपने बोला सर हमारा लेंथ आया 5.2 सेंटीमीटर, पता है आपका टीचर क्या करेगा? ऐसे कैंसिल कर देगा, क्योंकि आपने एरर तो दिखाया ही नहीं। और हर दुनिया के हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर होगा। मतलब एरर जो है ना, वो ये कह लें आप रू है एक्सपेरिमेंट की, उससे निकाल दीजिए तो एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एरर ही आपको बताता है कि आपका एक्सपेरिमेंट कितना परफेक्ट है। तो आपको जाना पड़ेगा अपने टीचर के पास कुछ ऐसे, 5 सेंटीमीटर इज फाइन, यू आर गेटिंग एवरेज ऑफ ऑल, प्लस माइनस 0.2 या 0.3 जो भी आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो यहाँ लिख दीजिएगा, इतना सेंटीमीटर। तब आपका टीचर समझेगा हाँ दैट इज परफेक्ट। तो ये 5 जो है ना बच्चा, दिस इज मीन वैल्यू और द ट्रू रीडिंग। 0.2 क्या आपका एरर है, और कौन सा एरर है? एवरेज और मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है बच्चे जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। ठीक, तो वो भी देख लेते हैं हम। टर्म आता है इसके बाद जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। अब ये फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या चीज होती है? तो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, आपको ट्रू वैल्यू पता है, तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आया दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इजी पीजी, राइट? तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर is equal to del A mean, that means average or mean absolute error divided by A mean, that means true value। तो यहां पे अगर फ्रैक्शनल एरर की बात करें तो 0.2 डिवाइडेड बाय 5, और ये फ्रैक्शनल एरर भी प्लस माइनस हो सकता है। सो इट्स बेटर फॉर मी इफ आई राइट विथ प्लस माइनस साइन हियर। If I put it with plus and minus sign, then that's better, because error can be positive, can be negative. Okay, this is fractional error. Well, there is something called percentage error, and I hope you guys know about that. Percentage error, percentage error, fractional error multiply by 100, that is percentage error, as simple as that. So plus minus del A mean divided by A mean, that means the true value, and multiply by 100. This is called percentage error. आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। देखें, अगर आपसे किसी भी चीज में एरर निकालने के लिए बोला गया है तो आप फौरन उसकी रीडिंग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सैंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, अब आपसे पूछा गया टाइम पीरियड निकालिए, तो आप उसको मेजर करेंगे। ओके, एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड, फिर आप दोबारा मेजर करेंगे 1 ऑसिलेशन 1.1 सेकेंड, कोई और मेजर करेगा, डिफरेंट टाइम आएगा। तो ऐसे 10 12 20 जितनी रीडिंग पॉसिबल है लें, जितना ज्यादा रीडिंग लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बट आपको पता है कि क्लास में इतना टाइम तो होता नहीं है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन इसे करेंगे अपने तरीके से, बिना एनसीईआरटी को देखे हुए। ठीक है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी देखना नहीं है, बस ये समझ लें कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं और अपने हिसाब से करना है इसे। तो आप लोग चाहें तो इस चीज के लिए, इस कैलकुलेशन के लिए आप लोग अपने कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। बिल्कुल, मैं अलाउ करता हूं क्लास में, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं होता कैलकुलेशन में वेस्ट करने के लिए, तो मैं कैलकुलेटर अलाउ करता हूं। लेकिन मेक श्योर कि स्कूल में आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना पड़ेगा, बट स्कूल में एक क्वेश्चन पे अच्छा खासा टाइम भी मिलता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। We measure the time period of a simple pendulum. सिंपल पेंडुलम हर किसी ने देखा है अपने लाइफ में, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने सिंपल पेंडुलम ना देखा हो। अगर नहीं देखा है तो यहां देख लो भाई, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये एक रियल पिक्चर मैंने ले ली सिंपल पेंडुलम की, सो दैट यू कैन फील इट। ओके, ये आपका सिंपल पेंडुलम है, दिस इज योर सिंपल पेंडुलम।
एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंट जो 11th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में बच्चे करते हैं। होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट के साथ, आप खुद देख सकते हो कि ये सिस्टम को बोलते हैं पेंडुलम। मतलब ये एक स्ट्रिंग है, एक बॉब कनेक्टेड है, और आप इसको यहाँ से रिलीज कर दो तो ये ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा, इस एंड तक पहुंचेगा, फिर यहाँ से वापस आना शुरू हो जाएगा, फिर इस एंड तक पहुंचेगा ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। अब यहां से ए से बी जाने में, फिर बी से ए आया वापस, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ठीक है। और एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब किसी बच्चे ने, सपोज कीजिए आपका कोई क्लासमेट है जिसने मेजर किया टाइम पीरियड इस सिंपल पेंडुलम का, तो एक बार जब उसने पहली बार मेजर किया तो उसको मिला टाइम पीरियड 2.63 सेकेंड, दूसरी बार उसे टाइम पीरियड मिला 2.5 सेकेंड, तीसरी बार उसे टाइम पीरियड मिला 2.4 सेकेंड, चौथी बार उसे टाइम पीरियड मिला 2.7 सेकेंड, और पांचवी बार उसे टाइम पीरियड मिला 2.80 सेकेंड। तो उसने कितनी रीडिंग ली, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? तो आप बोलोगे सर उसने कितनी रीडिंग ली? टेल मी। 5 रीडिंग्स। यस, उसने 5 रीडिंग लिया, 5 रीडिंग, ठीक है। अब 5 रीडिंग लेना क्या टेक्निकली सही चीज है? बिल्कुल सही चीज नहीं है। रीडिंग्स ज्यादा होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी ज्यादा रीडिंग होगी उतना फायदा होगा, ठीक है, उतना एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा हमें। तो अब 5 रीडिंग से तो हमारा काम नहीं बनना था। खैर, समझने के लिए, बस रीडिंग इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए हम 5 से ही अपना काम चलाएंगे। अब ट्रू वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? आप इसे A1 कह लें, इसे A2 कह लें। टाइम पीरियड है तो आप इसे T1, T2, T3, T4, T5 कह लीजिए, है ना। T1 इज द फर्स्ट रीडिंग, T2 इज द सेकंड रीडिंग, T3 थर्ड, T4 इस तरीके से। सो ट्रू वैल्यू, टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू इज एक्चुअली मीन ऑफ ऑल द टाइम पीरियड। मीन का मतलब क्या है? सबको जोड़ दें, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, सबको जोड़ दिया आपने और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। ये देखें आपको कितना आता है। तो ये आया आपको। अब मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप भी यूज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। सो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। तो ये मुझे जो आ रहा है बच्चे, इट कम्स 2.624। अभी राउंड ऑफ मत करो, इतना ही रहने दो, हमारा आंसर ज्यादा प्रिसाइज होगा। ओके, जितने डिसिमल तक जाओगे उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, तो इसको रहने दो अभी। 2.624 ये ट्रू वैल्यू है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स मींस इंडिविजुअल रीडिंग के साथ जो एसोसिएटेड एरर है, दैट मींस फर्स्ट रीडिंग के साथ जो एसोसिएटेड एरर होगा उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट रीडिंग। और ये होता क्या है बाय डेफिनेशन? T1 माइनस द ट्रू वैल्यू, राइट। ट्रू वैल्यू मींस T मीन, और T1 कितना है बच्चे? T1 इज 2.63। सो 2.63 minus 630 we can write, because we have 2.624. So 2.630 minus 2.624, 2.624, and it comes 0.006. It comes positive. Okay, so positive error, absolute error in the first reading is positive, मतलब ज्यादा आया। फिर इसी तरीके से आप सेकंड में निकाल सकते हैं। सेकंड इज T2 माइनस T मीन, ठीक है, T2 माइनस T मीन, और वो कितना है? वो है 2.56 माइनस 2.624, so that comes 2.560 minus 2.624, 2.624, it comes negative error, so it is less reading. Oh, that is quite obvious. You can see that minus 0.064. Okay, similarly you can find error in the third, and third is 2.42, 2.42 minus 2.624, 2.42 minus 2.624, it comes minus 0.204. Okay,
2.42 minus 2.624, it comes minus 0.206. This is the error, absolute error of the third reading. Absolute error of the fourth reading is 2.71 minus 2.624, which comes equal to, calculate करें बच्चे, 2.71 minus 2.71 minus 2.624. So 2.624, it comes positive error 0.086. Similarly, we can find error in the fifth reading, and that comes 2.80 minus 2.624, and that comes equal to how much? 2.80 minus 2.624 is positive error and 0.176. So these are absolute errors, errors related with individual readings. Okay, fine. Now it's time to find mean absolute error, because we are going to write the calculate absolute errors. Find relative error you can only find when you can find the mean absolute error. So let's find the mean absolute error. So you remember mean absolute error definition, del T mean. Yes, adding the magnitude of all absolute errors divided by the number of the readings. So you have to take only the magnitude. Del T1 magnitude is 0.006 plus 0.064 plus 0.206 plus 0.086 plus 0.176, all added divided by 5. So quickly, let's see this, what we get finally. Quick. Let's do this. So it comes 0.006 plus 0.006, 0.064, 0.064 plus 0.206, 0.206 plus 0.086, 0.086 plus 0.176, 0.176 divided by 5. So that comes, this comes to me 0.1076. This is mean absolute error. Yes. Now how we are, this is mean absolute error, that's cool. So how we are going to write the final value? If you are going to your teacher finally, you would say, sir, result is, reading is finally, reading, final reading, or result is true value, which is 2.624. Let me write this way first so that you can understand. True value, that means mean time period, plus minus mean absolute error. Yes. So that is 2.624 plus minus 0.1076. This is how you will write, and this is time period, so the answer is in second. Okay, so this is the true part, certain part. This is mean absolute error, average error. Now talking about fractional error. Okay, so fractional error. Fractional error is, if you remember, mean absolute error divided by T mean, right? So that comes equal to, mean absolute error is this 0.1076 divided by T mean, that means 2.624, and this comes equal to how much? Let's calculate this also. 0.1076 divided by 2.624, and that comes 0.0410. Fine, that's enough. Fractional error is this. Now the question is percentage error. So percentage error means multiply by 100. So 0.0410 multiply by 100. So it comes approximately 4.10%. This much is the error. So either you can write your answer like this, understand it, or you can say
finally to your teacher, so my final result is this 2.624 plus minus 4.10, sorry, 4.10%. So it is quite obvious, 4.10% of what? This much is the percentage error, but 4.10% of what? So of 2.624, it is quite clear. And you can write here second. So you can go to your teacher finally this way or this way. If they ask you especially that mention and find the percentage error, fractional error, then you have to do all this, okay? So we are done. I think this is enough to understand. So you guys understood what? Let me tell you. There is error associated with every experiment, every reading, right? Error associated with every experiment, every observation, every reading. If the true value is not given, then how we will find the true value? We will take the mean reading, mean or the average of all the readings, correct? That will be considered as the true value. Now there is error related with every individual reading. So that error is called mean absolute errors. Those errors can be positive, can be negative. One can be positive, other can be negative, correct? Now, how to find mean or the average absolute errors? You have to take the sum of all the mean absolute error, the magnitude of mean absolute errors, and divided by the number of readings. Yes, so average of the magnitude of mean absolute error, magnitude of the absolute error is called mean absolute error. And then percentage, a fractional error, mean absolute error divided by true value. This is fractional error multiplied by 100. That is percentage error. So we are done with the error. Fine. With this experiment and with this question. Now we have to see how error propagates in mathematical calculation. When we add the two quantities, when we subtract the two quantities, how error propagates, okay? So let's see it here. What we call that propagation of errors. Propagation of errors. So first we will see number one, in addition. If we are adding two quantities, then what will happen to the final result, okay? So let's say, and for example, you know, I'll take a simple example. You have two resistors in series across AB, two resistors. This is A, this B. This is R1, this is R2. So R1 is given 2 plus minus 0.3 ohm, and R2 is given 6 plus minus 0.4 ohm. So question can be asked that find the error in the equivalent resistance across AB. So you know, as A and B are connected in series, equivalent resistance across AB would be R1 plus R2. Then how would you write error finally in the equivalent resistance? Okay, so to understand this, we will go simply like this. Listen, we have two quantities A and B. Like here we have R1 and R2. So as far as the value of A is concerned in terms of error, it is written like this. Understand, A reading will be written like this: A plus minus del A. You need to understand this. The A is written like this as far as the value is concerned. The true value, I could have written A mean here, but you know, every time you can't write A mean, okay? It's really mean here and mean here. So you please understand, this is A mean, this is del A mean, okay? Similarly, if you have another quantity B, so you can write B mean or simply B plus minus average or mean absolute error in B. So del B mean, it's B mean actually, okay? But most of the time you won't see that mean is written. It is understood. So you have to understand it that way. Now, if you are adding A and B, two quantities, so let's say their addition is Z finally. So Z is equal to A plus B. So if you talk about the reading of Z, you will write it like this: the true value plus minus error in Z. I hope you understand it. Z mean plus minus del Z mean. So true value and error. So this is equal to A
if you talk about the value of A, how will you write it? The true value plus minus error in A, plus B plus minus error in B. So look now, it's easy peasy thing. What we are going to get? We are going to get A plus B like this, and plus minus del A plus minus del B. So I can take plus common, plus minus common, and I can write del A plus del B. Yes, so this is equal to Z plus minus del Z. Oh, so one thing is clear from here, that the certain part of the sum of the two quantities, that means certain part of A plus B means Z. Z from here is going to be certain part is A plus B. This is certain part of the addition. So that means for the addition of the certain part, you will simply add them. So the 2 and 6, they are simply added, and that will be the certain part in the addition. Okay. And if we talk about error, plus minus del Z, error, it is equal to plus minus sum of the individual error. Error in quantity A plus error in quantity B. You know what is best of this? In addition, you see the error of the two quantities are simply added, and this is the maximum possible error in addition of the two quantities. This is the maximum possible error. Fine. Even in subtraction, you will see error will remain same, del A plus minus del B. Only certain part, Z part, would be A minus B if you are subtracting the two quantities. So look at this question. If someone is asking you, what is the error in the equivalent resistance? How will you do this? So it's so easy peasy. We know both are in series, so R equivalent is equal to R1 plus R2. So when you have to add technically like this, you need to understand that you're going to write it like this. R equivalent is equal to R1, 2 plus minus 0.3 plus 6 plus minus 0.4. And you have seen how we add the things, right? Certain parts are simply added, 2 plus 6 simply added, plus minus errors are also added, 0.3 plus 0.4. So you will write your equivalent resistance as 8 with maximum possible error plus minus 0.4 plus 0.3 is 0.7. You can put them in bracket and you can write ohm. Now, if I extend this question a little bit and I ask you, can you tell me the percentage error in the fractional error in the equivalent resistance from here only? Can you tell me the fractional error? Yeah, fractional error in equivalent resistance. You know, that's easy peasy thing. Fractional error means mean absolute error. Mean absolute error is this, if you remember, right? This is your mean absolute error divided by the true value. So mean absolute error is 0.7 and true value is 8. Fine. This is fractional error. I could have asked you, tell me the percentage error also. The percentage error would be equal to multiply by 100. So 0.7 multiplied by 8 multiplied by 100. So it's like 70 by 8. 70 by 8. So percentage error is 70 by 8. It comes 8.75%. Too much error, okay? It's really too much error, 8.75%. But generally we don't get this much error. It's too much. Out of 8, 0.7 is too much error, yeah? So 8.75% error. Okay, so in case of addition, two quantities, how the errors propagate in the addition of two quantities, errors are simply added. Certain part added, errors are also added. Now let's see what happens in subtraction. Okay, second case in subtraction. So as far as subtraction is concerned, we have Z, which is subtraction of the two quantities, A minus B. Now we will write the reading. The reading of Z is Z, certain part of the Z, plus minus error. And reading of A is plus certain part, and then error of A. And then minus certain part of B, plus minus error of B. So we can write it like this, A minus C. Plus minus del A, leave it as it is,
Minus of B is minus. Now I want you to understand it. When you multiply minus with plus minus, it becomes minus plus. Now you can ask me, sir, is there any difference with plus minus and minus plus? So let me make you very clear. As far as till graduation it is concerned, it doesn't matter. I remember during my master, there was plus minus and minus plus in tensor physics. And it does make really a little different. Yeah, there is a little bit difference in tensor physics, but as far as algebra is concerned, I'm talking about the normal algebra, 12th standard, graduation standard, plus minus is almost minus plus. There is not a big deal with this. So minus plus minus minus is minus plus. So I will write it plus minus only so that you don't get confused. Please understand it. There is a difference, but in tensor physics, which you learn in master when you will do physics. But as such, in normal cases, you can take it plus minus as minus plus only. So now we can see that A and minus B taken separately, and plus minus again common. And so the errors are simply added, del A. So what is interesting here, that even in subtraction, as far as error is concerned, errors are simply added, individual errors are added, but the certain part are subtracted, certain part, as you can see. So the certain part is A minus B, it is subtracted, and in addition it was added. But as far as error is concerned, it is same in subtraction, it is same in addition. So individual errors are simply added, that's it. I hope it makes sense, right? So now we will move to another part, and that is called error, how error propagate in the multiplication in product. So we can see error in product or error in multiplication. Now I'll give you this thing with one example, that you are designing the car of a company. Let's say the very famous nowadays multiplication, very famous nowadays is Tesla. Even Apple is designing future cars like electronic cars. So they are doing experiment and they want to check the collision impact on the cars. So if you want to check the collision impact on the cars, you need to know the momentum with which the car is hitting something, right? So momentum, everybody know that momentum is mass times velocity. So mass of this object into velocity is called momentum. Fine. So momentum we write as the product of mass and velocity. Now you need to measure the mass also and velocity also to know this experiment, the impact of collision. How strong is your car? Okay. So for this, the mass would be measured, and the mass, let's say, it collides with a heavy iron ball, and iron ball is huge ball, you know that. So let's say it collides with iron ball of 20 kg mass with an error of 0.4. So this much kg, right? So there is error in the measurement of mass, and similarly there would be error in the measurement of the velocity. The car may be moving with 36 kilometer per hour and 72 kilometer per hour, like that. 72 kilometer per hour is really a good speed, right? So let's check this speed. 72 kilometer per hour means around 20 meter per second, but I would say let's take a little bit more speed. Let's make it 30 plus minus error is 2 here, right? Meter per second. So someone asked you, give me the momentum of the car. So momentum of the car, when you have to multiply mass and velocity. So in multiplication, the result comes momentum. So what is the error in the momentum? And momentum times multiply times velocity is all about error in product or multiplication. So we will go generally like this. Look carefully.
Z, now we have the product of two quantities A and B, and Z will be written as certain part of the Z, error in the Z. Fine, that is equal to error in the reading A plus minus del A, and similarly B plus minus del B. Fine. So the point is it comes Z plus minus del Z, keep it as it is. A plus minus, when you multiply it with B, listen. So I think you understand it. I'm multiplying, or I'm applying simple algebra. So first I'm multiplying A with B and then plus minus del B. So it is AB and then this plus minus sign and then A times del B. Understand it? A times del B. And then this plus minus B. So plus minus B del A. You can write del AB. That's also fine. That's multiplication only. 3 into 2 can be written as 2 into 3. Now what comes? Del A del B plus minus. So plus minus multiply with plus minus will remain plus minus, okay? Don't worry about it. So plus minus multiply with plus minus is del A into del B. Here is important point. You know, error is generally small. So when a smaller quantity like 0.2 multiply with another smaller quantity 0.3, it will come even smaller, 0.06. And the product can be neglected. So if two errors are multiplied together directly, yeah, two errors are multiplied, listen. So generally errors are very small. So this thing is neglected, guys, neglected. Reason I told you. Because if something is very less and you multiply it even a lesser quantity, the product is even smaller, like 0.2 multiply 0.3 is 0.006. So this part is neglected as compared to this part, okay? Now what I would do, I know Z is equal to AB. So I will divide left side by Z and right side by AB because I know Z is equal to AB. But why we are doing this, you will understand the reason. So divide both side by Z or AB. So left side with Z, Z divided 1 plus minus del Z by Z is equal to this side, right side is divided with AB. So AB divided 1 plus minus AA cancel del B by B plus minus BB cancel del A by A. So now you can see 1 is cancel out. So what you see here, that finally the fractional error in the product, in the Z, that means in the product, the fractional error is equal to 1 cancel out, plus minus is taken common, and it is del A by A, fractional error in A plus fractional error in B. What is important, bacha? The maximum error in the product will be this. I'm talking about maximum fractional error in the product is simply sum of the individual fractional error. अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है, दोनों को आप प्रोडक्ट में ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? सिंपली इंडिविजुअल क्वांटिटीज के फ्रैक्शनल एरर का सम। बहुत आसान सी भाषा में ये बात हो गई, ठीक है? अब इस चीज को बॉक्स कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आ जाइए यहाँ पे। तो आपने देखा, हमने पूछा आपसे मोमेंटम में एरर बताओ कितना आया है, तो आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? मोमेंटम का एरर निकालने के लिए आप दोनों के इंडिविजुअल एरर का, फ्रैक्शनल एरर का सम कर देंगे। पहले फटाफट मुझे यहां बताएं, फ्रैक्शनल एरर मास में कितना आया? मास का फ्रैक्शनल एरर तो डेल एम बाई एम होगा, सही? और एरर कितना है? 0.4। ट्रू वैल्यू कितना है? 20। तो ये एरर आ गया, फ्रैक्शनल एरर मास में। फ्रैक्शनल एरर वेलोसिटी में आप कैसे लिखेंगे बच्चे? डेल वी बाई वी, और वो कितना है? 2/30। ये फ्रैक्शनल एरर आ गया वेलोसिटी में। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शनल एरर प्लस माइनस इन मोमेंटम, तो आप इसे ऐसे लिखोगे प्लस माइनस और दोनों इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर का सम। सो 0.4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 2/30, ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। परसेंटेज एरर निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए पहले इतना ही बताइए मुझे, ये रिजल्ट कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। So I think it comes to me 0.4 divided by 20,
0.02 and 0.066. So 0.066, fine. So this is fractional error. It is going to be plus 0.08. My mistake. 0.086667, you can write like that. Okay, 666 like that. So this is the fractional error. And if I asked you what is the परसेंटेज एरर इन द मोमेंटम, जो आपका ये मोमेंटम आया है इसमें परसेंटेज एरर कितना है, तो आप इसे क्या करोगे? सिंपल सी बात है ना, परसेंटेज एरर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस माइनस ये यहीं रहने दो 0.08666 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8.666 या आप उसे राउंड ऑफ करके 8.67 परसेंटेज कह दो। इतना एरर है मोमेंटम में, जी हाँ, ठीक है। तो ये मोमेंटम इतना ज्यादा भी है, एक्चुअल मोमेंटम इससे इतना कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। तो जो आपने जो रीडिंग की है उस एक्चुअल मोमेंटम इससे इतना ज्यादा हो सकता है बहुत से बहुत, या इतना कम हो सकता है, इतना परसेंटेज, ठीक है। तो ये थी आज हमने जो आपको पढ़ाया, वो एरर कैसे प्रोपागेट करता है, क्या होता है डिवीजन में भी। चलिए यहीं पे आपको बता भी देते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो बचा नहीं कि हम आपको डिवीजन वाला डेरिवेशन समझाएं, बट जिस तरीके से आपने देखा कि सब्ट्रैक्शन एडिशन में एरर्स की जहां तक बात है वो इंडिविजुअल एरर्स एड अप हो जाता है, बिल्कुल यही काम होता है डिवीजन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी, बट यहाँ फ्रैक्शनल एरर ऐड होते हैं। इवन डिवीजन में भी बच्चे, इफ यू हैव z इज इक्वल टू a बाई बी, दो क्वांटिटी है a बाई बी, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ये आपको क्या देता है? करंट देता है। तो वोल्टेज में कुछ एरर होगा, रेजिस्टेंस में कुछ एरर होगा, तो करंट में जो एरर होगा ना, फ्रैक्शनल एरर, वो दोनों के इंडिविजुअल एरर का सम होगा, वोल्टेज के इंडिविजुअल और रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल का सम। ये बात बराबर है, सेम है, किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए और डिवीजन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में आप लोग भी कुछ तैयारी के साथ आना, और प्रणव सर की क्लास होगी अगली क्लास केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के भी क्लास के लिए ध्यान से देखें कि मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको अपडेट मिलेगी। ऑब्वियसली मेरे बाद जो क्लास होती है वो केमिस्ट्री की ही होती है, ठीक है। तो प्रणव सर विल बी टेकिंग केमिस्ट्री क्लास, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, थैंक यू।